Hello everyone, welcome to the another session of coordination chemistry. In the previous two cases, I had explained you about the difference between the complex salts or complex compounds and double salt. In the second issue, I had explained you about the basic terminologies involved in coordination chemistry. And now in this third session, yes, you can check it out. We are going to talk about more about ligands. Okay. Now, first of all is, in the second session of this coordination chemistry, I had explained you what ligands are all about. They can be either neutral species or they can be charged species. They are being attached to the central metal, and their attachment is through its ability to donate a pair of electrons. Alright. So, what are ligands? We will once again go for it. Neutral or charged species having an ability to donate pair of electrons to the central metal atom or ion. Now, my dear friends, we are in this particular session going to consider the classification, or what we call it as types. Okay, we call it as classification, or what we call it as types. Now here, let me tell you, my dear friends, there are two broader means of classification of ligands. First one is based on the charges, because as I said, that they are either neutral or charged species. So on the basis of that, we are going to define, or we are going to specify the various types of ligands. And the second classification is, my dear friends, based on the number of donor atoms, which makes it so very important. उसके पास डोनर एटम है, इसलिए उसे लिगैंड बोला जाता है, और क्योंकि उसके पास डोनर एटम है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मेटल उसको एक्सेप्ट करता है, तब जाकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है. ओके, तो ये दो चीजों के आधार पर हम लिगैंड्स को क्लासिफाई करेंगे. तो आइए दोस्तों शुरू करेंगे. सबसे पहला कैटेगरी, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? चार्जेस. अब जब हम चार्जेस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, सो हम बोलेंगे कि वी आर गोइंग टू क्लासिफाई दिस इनटू थ्री कैटेगरीज. Okay, on the basis of what? Charges. We are going to classify ligands into three categories. सबसे पहला है, and that is we are going to talk about negative. फिर हम बात करेंगे about positive, और फिर हम बात करेंगे neutral. तो इस तरीके से there are three subtypes of ligands on the basis of what? Charges. Negative, positive and neutral. अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा आपको, और उसको कैसे नेमिंग किया जाता है अकॉर्डिंग टू IUPAC. Okay, my dear friends, once again I will like to tell you that as we go ahead, I will be posting the video on the IUPAC nomenclature of coordination compounds, कि उनके नेमिंग कैसे किया जाता है उस coordination compounds का. Okay, तो उसका भी वीडियो आप देखना भूलिए मत. इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो जैसे ही कोई मैं नया वीडियो डालता हूँ तुरंत ही आपको बिना कोई हासिल, बिना कोई डिफिकल्टी आपको पता चल जाएगा. सो एनीवेज वी गो फॉर द नेगेटिव आयंस नाउ. अब जब नेगेटिव लिगैंड्स की बात होती है, सो आई गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल्स, एंड दैट इज वी हैव OH माइनस, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सो. Okay, we call it as, next one is F minus, so it is fluoro. Next is Cn minus, we call it as cyano. Next is CO3 2 minus, we call it as carbonato. This is all according to the IUPAC nomenclature. We next call it as Cl minus, so that is called as chloro. Next is we talk about is C2O4 2 minus, so this is called as oxalato. Next is we have I minus, so we call it as iodo. Next is we have NO2 minus, so we call it as nitrito. N. Next is I got ONO minus, this I will call it as nitrito O.
So these are the various examples. और भी बहुत सारे examples है. Okay, SO4 minus and all that, sulfato we call it as. So ये कुछ examples है which comes under what? Negative ligands. एक बात आप देख सकते हो इसमें, अगर आपने नोट किया है तो दिस आर द नेमिंग्स अकॉर्डिंग टू द IUPAC nomenclature. तो कॉमन थिंग अगर आप देखो सब जगह, एंड दैट इज ऑल दीज आर गोइंग टू एंड विद व्हाट? O. ओके, ये सब कुछ किससे एंड होगा? O से एंड होगा. ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स है. पॉजिटिव की बात करें तो वी हैव फर्स्ट वन इज NO प्लस, इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसीलियम. And the next one which we have is, we don't have too many of positive ligands. N2H5 plus, so इसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजीनियम. Okay, so the positively charged are two of them predominantly. एक है नाइट्रोसीलियम और दूसरा हाइड्रोजीनियम. We go to the next one, and that is we talk about neutral. Neutral में पहला है NH3. Please note the spelling, it is amine. अमोनिया जब लिखते हैं हम लोग तो AMONIA ऐसा लिखते हैं, लेकिन this is AMMINE. So please note on the spelling very well. Amines generally we write it down as AMINE, but this is double M. Next one is CO. CO को हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोक्साइड. But then, my dear friends, please be very clear that whenever that CO is bonded with some other species, it is not called as carbon monoxide, it is called as carbonyl. Okay, you have done this in organic chemistry also when you were discussing about aldehydes as well as ketones. Okay, so we have carbonyl. Next one is we have H2, which we call it as aqua. Okay, generally we call it as water, like according to the IUPAC nomenclature we call it as what? Aqua. So it is H2O. Okay, sometimes we also call it as aqua as well. Okay, next one is we have EN, which is called as ethylene diamine. Ethylene diamine. Okay, now ethylene diamine का अगर आपको स्ट्रक्चर चाहिए तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ, and that is it is CH2 NH2. CH2 NH2. Okay, this is ethylene diamine. Nitrogen is going to be the donor atom. So in this way it can be attached to a metal like this. Okay, so this is what we talk about the different types of ligands which are based on what? Charges. So पहले दोस्तों there are many of the ligands which are negatively charged. Negatively charged काफी ज़्यादा है as compared to the positive and the neutral one. Okay, so these are the negative ones. Next is we have the positive. Positive, generally there are only two of them, nitrosinium and hydrogenium. Okay, it ends with IUM. Next is we have neutral. तो उसमें थोड़ा spellings, the representations are going to be different. Okay, we are going to call it as amine. We are going to call it as carbonyl. We are going to call it as aqua. We are calling it as EN, which is called as ethylene diamine. Okay, so this is, my dear friends, on the basis of charges. I hope you have understood up to this very well. Alright, my dear friends, you must have understood the first classification, and that is on the basis of charges. Now, the second classification, my dear friends, we go into, and that is called as denticity. Okay, क्या बोला जाता है उसको? Denticity. Now please don't consider it is related to some teeth, dentist, ऐसा कुछ नहीं है. Okay, it is denticity का मतलब होता है it is based on the number of donor atoms of the ligands. दोस्तों ये बात काफ़ी मायने रखता है. मैंने आपको ये मेरा जो सेकेंड वीडियो था पार्ट 2 ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें भी मैंने इसके बारे में बताया था कि जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन कर रहा था तभी की बात है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड आई टोल्ड यू ओवर देयर इट इज द नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ द लिगैंड्स. ऑफ कोर्स व्हेन आई यूज द वर्ड डोनर एटम्स, यानी ऐसा मत समझो कि इट्स गोइंग टू बी न्यूट्रल, ऐसा नहीं है दोस्तों. आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट एनी स्पीशीज which has an ability to donate electrons and to the central metal, and thereby it will behave as a ligand. तो डोनर एटम्स के ऊपर हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, इसे हम लोग डेंटिसिटी बोलते हैं. तो शुरू करते हैं सबसे पहला कैटेगरी अंडर डेंटिसिटी, एंड दैट इज मोनोडेंटेड. ओके, मोनो का मतलब तो आप जानते ही हो, एंड दैट इज वन.
डेंसिटी इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ डोनर एटम्स. सो दैट मीन्स हम ऐसे बात करेंगे कि यहाँ पर इट हैज गॉट ओनली वन डोनर एटम bonded to the central metal atom or ion. Okay, जैसे कि हो गया F minus, Cl minus. Okay, I will be also giving you another examples. NH3, H2O. Okay, these are also the examples. बहुत लोग बोलेंगे चलो ये तो समझ में आता है, they are isolated species. लेकिन ये अमोनिया और वाटर कैसे मोनोडेंटेड बन गया? उनके पास तो दो दो एटम्स है. मैं मानता हूं दोस्तों इस बात को कि अमोनिया और वाटर में दो दो एटम्स है, लेकिन उसमें डोनर एटम्स कौन है वो बहुत जरूरी है. ओके, जितने भी एटम्स होते हैं जरूरी नहीं कि सबके सब वो डोनर एटम हो. अमोनिया में दो डोनर एटम्स है. आई मीन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. टोटल देयर आर गोइंग टू बी 4. ओके, बट देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स of whose atoms are going to be present. One is nitrogen and the other one is hydrogen. ओके, लेकिन दोस्तों हाइड्रोजन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था इन माय प्रीवियस वीडियोस कि अगर डोनर एटम है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने की काबिलियत होनी चाहिए, और कोई भी चीज़ अगर आपको देनी है तो आपके पास वो होनी चाहिए. तो हाइड्रोजन के पास जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो लोन पेयर या फिर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे दे सकता है? सो हाइड्रोजन जरूर है यहाँ पर, लेकिन इट इज नॉट अ डोनर एटम. डोनर एटम इज व्हाट? नाइट्रोजन. उसी तरीके से यहाँ पे एक्वा या वाटर में भी ऑक्सीजन इज द डोनर एटम. सो इट्स ओनली वन एंड देयरफॉर वी कॉल इट एज व्हाट? मोनोडेंटेड. ओके, एक और बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब मैं मोनोडेंटेड लिगैंड की बात कर रहा हूँ, दे कैन बी बॉन्डेड टू टू सेपरेट मेटल्स. ओके, ये भी याद रखिएगा, can be bonded to two separate metals. और इस तरीके से मेटल एटम्स और आयंस, और इस तरीके से वो ब्रिज की तरह काम करेगा. दो अलग अलग मेटल एटम और आयन को जोड़ने की कोशिश करेगा वो, और इस तरीके से हम इसे बोलेंगे ब्रिजिंग लिगैंड्स. Okay, we can call it as what? Bridging ligands. The ligand which is being attached to two separate metal atoms, okay, they are called as bridging ligands. But the ligand is going to be the one only. That means I give you an example, and that is, say मैंने अगर ऐसा लिखा F attached to say cobalt, यहाँ पर भी H is attached to cobalt. ऐसा नहीं कि it is attached to carbon. Please, it's cobalt. Okay, it's capital C and small o. यहाँ पर भी याद रखिएगा वो. यहाँ पर OH and this is this. तो ये जो है this will behave as what? A bridging ligand. क्योंकि वो दो मेटल को एक साथ अटैच हुआ है. ओके, सो समझ में आया आप लोगों को क्या फर्क है? मोनोडेंटेड बोलते हैं और फिर बाद में हम उसको ब्रिजिंग भी बोलते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस. जब मैं उसको मोनोडेंटेड बोलता हूँ मतलब उसके पास एक ही डोनर एटम है जो मेटल के साथ बॉन्ड कर सकता है. और ब्रिजिंग की जब मैं बात करता हूँ तब वो एक वो दो अलग अलग मेटल के साथ बॉन्ड कर सकता है. क्योंकि ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा पॉसिबल है कि द डोनर एटम्स है एक ही, लेकिन इट हैज गॉट मोर देन वन एबिलिटी ऑफ डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अगर उसके पास 3 लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर्स ऑन फ्लोरीन. So therefore it can behave as a bridging ligand. So it is donating one pair to the left CO, it is donating one pair to the right CO. तो इस तरीके से हम उसको क्या बोलते हैं? Bridging ligands. Okay, so this is, my dear friends, the first category, and that is about monodentate ligands. I hope you have understood this very well. Please have a look at it. Alright, my dear friends, so you must have understood what is monodentate is all about. Mono का opposite करेंगे. Mono मतलब one. तो अभी हम बात करेंगे yes, poly. Poly मतलब many. So the second category under denticity is polydentate ligands. तो आपको मालूम हो गया होगा कि it contains more than one. एक से ज़्यादा donor atoms. Now once again I repeat, please don't take the literal meaning atoms. So it is more than one donor atoms which are being bonded to the same metal atom. ये बहुत जरूरी है दोस्तों.
to the same metal atom. मोनोडेंटेड क्या होता है, वो अलग अलग मेटल एटम से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पॉलीडेंटेड में हमें ये बताना है कि एक से ज्यादा डोनर एटम होना चाहिए एंड इट हैज टू बी अटैच्ड टू व्हाट, द सेम मेटल एटम और आयन. उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेड लिगैंड्स. ओके, अभी देखो दोस्तों, पॉली इज अ वेरी जनरल टर्म. मोर देन वन कम्स इन द वर्ड. Yes, poly. Now I'll go into some of the specific parts so that you can understand this very well. And that is, let's consider a complex which is like Cu, En, twice, 2 plus. En मतलब क्या होता है, इथिलीन डायमाइन. So copper is going to be at the center. अभी इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं. It is NH2, CH2, CH2, NH2. इथिलीन डायमाइन, ये एक मॉलिक्यूल हो गया इथिलीन डायमाइन का. सिमिलरली आई हैव NH2, CH2, CH2, NH2. ये दूसरा हो गया. ओके, दिस इज द सेकेंड मॉलिक्यूल. सो वी हैव रिटन En ट्वाइस. अभी एक इथिलीन डायमाइन के पास 2 डोनर एटम है, लाइक दिस. ये आपको मालूम है, डोनर एटम है तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय मींस ऑफ एन एरो. Okay, so this ethylene diamine is called as a bidentate ligand. इसको क्या बोलेंगे हम, bidentate ligand. और bidentate ligand बनेगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर if you can have a look at it, it forms a ring structure. देखा आपने, ऐसा रिंग बनता है. Okay, it's somewhat like this. एक रिंग बन गया ऐसा, और ये दूसरा रिंग, यहाँ पे कॉपर है सेंटर में. सो रिंग स्ट्रक्चर बनाता है कॉम्प्लेक्स का, और इसको हम लोग बोलते हैं, एंड दैट इज चिलेट. और ये लिगैंड्स को हम लोग बोलेंगे चिलेटिंग लिगैंड्स. कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, चिलेट कॉम्प्लेक्स. और जो लिगैंड्स है, जो बाइडेंटेड है यानी जो पॉलीडेंटेड है, okay, will have a tendency to form ring complexes and those are also called as chelating ligands. Monodentate में हम ऐसा नहीं बोल सकते because they do not have an ability to form ring complexes. तो ये एक एग्जांपल दिया. दूसरा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा. एक इथिलीन डायमाइन का एग्जांपल है, दूसरा इरिडी. अभी इरिडी का फुल फॉर्म मैं आपको बताना चाहूंगा. इट इज इथिलीन. इथिलीन है तो 2 कार्बन एटम ऐसे ड्रॉ करो. फिर है डाई अमाइन. अमाइन्स आर बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन, तो ऐसे ऑन द आइदर साइड ड्रॉ नाइट्रोजन. टेट्रा एसिडिक एसिड. टेट्रा मतलब 4, तो 2 इधर 2 इधर, और एसिडिक एसिड है, सो वन ऑफ द H इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड, सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग CH2 COOH, CH2 COH, CH2 COOH, and this is CH2 COOH. Okay, so this becomes ethylene diamine tetra acidic acid का ये स्ट्रक्चर बन जाता है. ओके, अब दोस्तों क्योंकि वो एसिड है, सो एसिड्स हैव एन एबिलिटी टू डोनेट H प्लस आयंस. तो ये O और H का बॉन्ड ब्रेक होगा, सो दिस H विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ H प्लस. दिस ऑक्सीजन विल हैव अ नेगेटिव चार्ज. तो इस तरीके से वी विल बी गेटिंग 4 ऑक्सीजन विथ अ नेगेटिव चार्ज. ओके, तो 4 ऑक्सीजन और ये 2 नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. सो टोटल इरिडिए के पास 6 डोनर एटम्स है. कितना है उसके पास, 6 डोनर एटम्स. एंड देयरफॉर वी कॉल इट एज हेक्साडेंटेड. ओके, वी कॉल इट एज व्हाट, हेक्साडेंटेड. आई बात समझ में? ओके, आई होप यू आर गेटिंग वेरी क्लियर विद दिस पार्ट. कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिगैंड है, उसके पास डोनर एटम्स है, तो जितने डोनर एटम्स एक साथ मेटल के साथ जुड़ जाएंगे उतने नंबर्स आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड. अगर एक ही डोनर एटम है, ओके, तो इट इज कॉल्ड एज मोनोडेंटेड. और अगर एक से ज्यादा है और जितने भी ज्यादा है वो सारे के सारे एक साथ एक ही मेटल को अटैच होने चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेड. तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दिया. ये इथिलीन डायमाइन मॉलिक्यूल है. एक इथिलीन डायमाइन के पास 2 नाइट्रोजन है और दोनों नाइट्रोजन एक साथ सेम मेटल कॉपर को अटैच हो रहा है, सो दिस इज बाइडेंटेड. यहाँ पे इरिडिए है. यहाँ पे टोटल देयर आर गोइंग टू बी 6 डोनर एटम्स, 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन, एंड ऑल दीज 6 are being simultaneously attached to one central metal, same central metal. और इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, हेक्साडेंटेड लिगैंड्स. ओके, मैं एक और बात बताना चाहूंगा इस कैटेगरी में दोस्तों.
और वो ये है कि जब हम पॉलीडेंटेड की बात करते हैं, इट हैज गॉट मोर देन वन डोनर एटम, नॉट नेसेसरी that all the donor atoms will be involved in bonding with the ligand, okay, with the metal. यानी जरूरी नहीं होता है कि it is going to, जितने भी donor atoms are going to donate electrons to the central metal and thereby forming a coordinate covalent bond. It depends upon the conditions in which the complexation takes place. It depends on the condition in which type of metal it is going to be associated with. Okay, so मैं कुछ आपको example दे देता हूँ, so you understand this very well, and that is called as CrOH HEDTA. Okay, this is what a complex is. Okay, ये वाला है complex मैं consider करता हूँ. तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर CrOH EDTA, तो यहाँ पर this is going to behave as pentadentate. Normally EDTA is hexadentate, but this is going to be pentadentate. यानी एक जगह पर H लिखूंगा तो obviously that oxygen will not be a donor atom. तो अभी कितना हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, so that means this is 5. So CrOH HEDTA. Okay, that can be an example. Another example I can give you is PD H2 EDTA. Like this. ऐसा एग्जाम्पल दूंगा. तो यहाँ पर अभी समझो यहाँ पर भी H आ गया, यहाँ पर भी H आ गया, तो इसका मतलब ये 2 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, और इस तरीके से इट विल बिहेव एज अ टेट्राडेंटेट लिगैंड. ओके, और ऐसे लिगैंड्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड. ओके, ऐसे लिगैंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लेक्सीडेंटेड. फ्लेक्सी का मतलब क्या होता है, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड फ्लेक्सिबल. ओके, यानी इट्स नॉट रिजिड कि एवरी टाइम वो इतना ही डोनर एटम हमेशा देगा लिगैंड को. नो, नॉट नेसेसरी. इट ऑल डिपेंड्स, एज आई सेड, द नेचर ऑफ द मेटल टू विच इट इज बॉन्डेड, द कंडीशंस इन विच द कॉम्प्लेक्सेशन हैज टेकन प्लेस, एंड अकॉर्डिंगली ओके इट कैन रिजल्ट इन द डिफरेंट और द वेरिंग नंबर्स ऑफ डोनर एटम्स. तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्सीडेंटेड. और एग्जांपल मैंने दे दिया EDTA का. जनरली इट हैज गॉट 6 donor atoms. If all the 6 donor atoms are bonded to the central metal, okay, then I call it as hexadentate. Sometimes out of the 6, only 5 are being donated to or attached to the central metal, so I call it as pentadentate. Sometimes only 4 of them are going to be associated with the central metal, then I call it as tetradentate, and therefore I call this as flexidentate ligand. So दोस्तों ये है about polydentate ligands, my dear friends. So I hope you have understood this. On the basis of the examples, please have a look at it. My dear friends, we continue with the classification of ligands, and under that now we talk about the final part, and that is called as ambidented ligands. Now what do you mean by this ambidented ligands? I give a very simple part of this, and of course in the example also, so that you may understand this very well. Ambidented ligands का मतलब होता है कि it has got more than one donor atom. More than one donor atom. यानी आप बोलोगे फिर तो इसको पॉलीडेंटेड बोल दो ना, क्यों ये नया वर्ड बोलते हो एम्बीडेंटेड. लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होता है दोस्तों कि इट हैज गॉट मोर देन वन डोनर एटम, बट ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन only one donor atom is associated or is bonded to the central metal. It is bonded to what? The central metal. Only one of them is going to be bonded. Okay, to the central metal. Of course, it can be either atom or a line. तो समझ में आया? यानी है उसके पास एक से ज्यादा डोनर आटम, मतलब है वो पॉलीडेंटेड, लेकिन बिहेव कैसे करेगा जब कॉम्प्लेक्सेशन की बात होगी तब? यस, मोनोडेंटेड. और ऐसे लिगैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड. है पॉलीडेंटेड, बर्ताव करेंगे कैसे? मोनोडेंटेड. और ऐसे लिगैंड्स को सिंपल भाषा में हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड. मैं आपको एग्जांपल देता हूं सो इट बिकम्स वेरी क्लियर टू यू, एंड दैट इज NO2. तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं MnO2, तो यहां पर द बॉन्डिंग इज थ्रू नाइट्रोजन, तो इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रीटो N.
उसी तरीके से same way I can also show another way of attachment and that is like this ONO. This is also NO2 only. लेकिन मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि it is very clear the donor atom is oxygen. तो हम इसको क्या बोलेंगे नाइट्रीटो O. यानी है उसके पास दो डोनर आटम नाइट्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन, यानी है वो पॉलीडेंटेड. लेकिन जब कॉम्प्लेक्सेशन की बात आती है, जब वो मेटल के साथ जुड़ने की बात आती है, तो सिर्फ एक ही सेंट्रल मेटल उसके साथ जुड़ता है. तो यहाँ पर वो सिर्फ नाइट्रोजन सिर्फ जुड़ा है, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ. मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, दैट इज MsCN. दिस इज कॉल्ड एज thiocyanatoS. ओके और अगर मैंने इसको थोड़ा अटैचमेंट चेंज किया तो इट विल बी लाइक MnCS. सो दिस विल बी कॉल्ड एज thiocyanatoN. ओके पहले की भाषा में हम इसको बोलते थे नाइट्रो एंड नाइट्रीटो. पहले की भाषा में हम इसको थायोसाइनेटो एंड आइसोथायोसाइनेटो बोलते. लेकिन अभी जो पर्टिकुलर एलिमेंट डोनर आइटम अटैच्ड है वो हम लिखते हैं. सो यहाँ पर इट इज वेरी क्लियर कि मैंने N लिखा है, सो दैट मीन्स दैट इज द बॉन्डिंग इज गोइंग टू बी थ्रू नाइट्रोजन. यहाँ पे मैंने O लिखा है, सो दैट मीन्स द बॉन्डिंग इज थ्रू ऑक्सीजन. सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो SCN और NCH, उसके पास दो डोनर आटम है नाइट्रोजन एज वेल एज सल्फर, बट ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्सेशन इट्स आइदर सल्फर और नाइट्रोजन बीइंग बॉन्डेड. तो इस तरीके से मैं इसको बोलता हूँ thiocyanatoS और मैं यहाँ पे बोलूंगा thiocyanatoN. So this is it, my dear friends, about classification of ligands. Okay, so please have a look at it. This was the last category and that was ambidented ligands. So if you can recollect in this entire particular session, we started first of all on the basis of charges. तो तीन प्रकार है उसमें, that is negative, neutral and positive. And then we spoke about denticity. तो उसमें we have monodentate, polydentate and ambidentate. Polydentate can be once again specifically classified as bidentate and tridentate and hexadentate and all that stuff. मैंने आपको एक और concept flexidentate भी explain किया था. So I hope the classification of ligands is very clear to you all. Stay tuned to my channel for the further updates with respect to coordination chemistry. See you all. Thank you very much.